मॉर्निंग क्लास 8 क्लास। हम आज कर रहे हैं फोर्स एंड प्रेशर को डीजी क्लास में बच्चा। ओके बच्चे, फोर्स एंड प्रेशर। आई थिंक यू ऑल आर फाइन एट योर होम। ओके बेटा, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ओके बच्चा, लेट्स सी फोर्स एंड प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर में बेटा सबसे पहले हम फोर्स को करेंगे। व्हाट इज फोर्स? मैंने बताया था जब आप किसी चीज पे अपना बल लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, तो दैट इज नोन एज फोर्स। पुल एंड पुश इज नोन एज फोर्स। लेट्स सी। What a horrible situation to be stuck in. The man is trying every possible trick to bring his car back on the road. He has finally succeeded. And look what is happening here. This woman is trying to stop the piano from sliding away. Look at both these incidents again. Do you notice anything common between the actions of these two? Both the man and the woman were using force to change the state of motion or rest of an object. The man pulled and pushed the car to set it back in motion, while the woman pushed against the piano to stop it from sliding. A pull or push action on an object is defined as force. Setting a swing in motion, playing a football match, pulling a heavy load, and the working of machines are all a result of the application of force. Force is an interaction between bodies, or between a body and its environment, causing a pull or push effect or a change in motion. It brings about a change in the state of motion or rest of an object. Force is our constant companion. We use force for the most mundane activities like opening and closing doors, walking, climbing into a bus, or writing notes. Even getting out of bed requires some amount of force. The result of the force applied on an object depends on the magnitude of the force as well as its direction. Force is hence a vector quantity. Have you ever noticed that it is often much easier to cycle during sunny days than during windy days? Can you say why? In both situations, there are two forces acting on the bicycle. One is the force applied by the bicyclist on the pedal in order to move the bicycle forward. The other is the force of wind acting in the opposite direction of motion. When there is more than one force acting on a body, the resultant or net force is considered.
As force is a vector, the resultant or net force also has both magnitude and direction. The bicyclist is pedaling hard to move forward and overcome the force of wind opposing its motion. But what will be the magnitude and direction of this resultant force? When two or more forces are acting on an object and in opposite directions, the resultant or net force will be the difference between these two forces. And the direction of the resultant force will be the same as the greater of the two forces. When riding a bike on a sunny day, the force of the wind is much less than that exerted by you. However, when riding a bike on a windy day, you will be able to move the bike forward only if you can overcome the force of the wind. The moment you overcome the force of the wind, the resultant force will be in the same direction as you are going. If the two forces acting in opposite directions are equal in magnitude, then the resultant or net force is zero, and the object will remain stationary or in equilibrium. When two or more forces are acting on an object in the same direction, the net force is a sum of all the forces. When an object is stationary, are there any forces acting on it? Well, there is the force of gravity, which pulls the object to the center of the earth. Besides gravity, there are other forces, but the forces balance out, and the resultant force is zero. That is how the object remains stationary. Force applied on an object can affect its state in several ways. Let's take a look at some of the effects of force. Force can change the state of motion of an object. It can induce motion in a stationary object. It can change the speed and direction of a moving object. It can bring an object to rest. Force applied on some objects can alter their shape and size. फोर्स किसे कहा जाता है बेटा? पुश और पुल। कोई भी चीज को पुल और पुश एक्शन ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट पे पुश और पुल किया जाए तो क्या कहलाएगा? वो आपका फोर्स कहलाता है बेटा। ओके बच्चे, किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप पुश और पुल करते हैं तो नोन एज फोर्स। इट इज एन इंटरेक्शन बिटवीन द टू बॉडीज और बिटवीन बॉडी एंड द एनवायरनमेंट। ये इंटरेक्शन टू बॉडीज के बीच में भी हो सकता है, बॉडीज के बीच में भी हो सकता है, और बॉडी और एनवायरनमेंट के बीच में भी अट्रैक्शन हो सकता है। तो जब पुश एंड पुल जब लगता है बॉडीज टू बॉडीज में और एनवायरनमेंट और बॉडी के बीच में, इज नोन एज फोर्स। ओके बच्चा।
जब एक ही डायरेक्शन में दो या दो से ज़्यादा फोर्स लगती हैं, तो सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रही हैं तो सेम फोर्स कहलाती हैं। उसको F1 प्लस F2 कर देते हैं, फोर्स को F से शो ऑफ करेंगे। ओके बच्चा, जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वो अपोजिट डायरेक्शन, दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है आपका तो अपोजिट डायरेक्शन फोर्स कहलाएगी। ठीक है, नेट फोर्स इसमें जीरो होगा। और जब दोनों ही साइड से फोर्स लग रही हैं, मूवमेंट नहीं हो रही, कोई भी पुश पुल नहीं हो रहा, मूवमेंट नहीं हो रही, दैट इज नेट फोर्स इज जीरो। ओके बच्चा, नेट फोर्स इज उस टाइम पे जीरो। जब बेटा फोर्स लगता है तो क्या होता है, मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है, जब उस पर फोर्स लगेगी तो वो क्या करेगा, मूव करेगा। चेंज एन ऑब्जेक्ट स्पीड एंड डायरेक्शन, ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन को ये चेंज कर देता है बेटा। उसके बाद ब्रिंग्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट टू रेस्ट, और मूविंग ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर भी ला देता है, रेस्ट को मूविंग पे, मूविंग को रेस्ट पे ला देता है। और शेप और साइज ऑफ अ ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो चेंज ड्यू टू फोर्स बेटा। ओके बच्चा, बच्चे ये हमारा चैप्टर हुआ, इसमें फोर्स हमने करा। ठीक है, फोर्स एंड प्रेशर, प्रेशर को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी हमने फोर्स करा। आई थिंक यू ऑल हैव know that what is force beta. Okay bacha, I think that you are all be understand. Okay beta, bye, be safe.